हमारी आने वाली नेक्स्ट 5 वीडियोस में हम उन 5 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे विच एवरीवन शुड कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग एनी म्यूचुअल फंड। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इन दिस वीडियो। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, वन इज डायरेक्ट फंड एंड अदर इज द रेगुलर फंड। अब इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट प्लान में आप कंपनी को डायरेक्ट अमाउंट पे कर रहे हो विदाउट एनी मिडल मैन, एंड रेगुलर प्लान में देयर इज अ मिडल मैन इन्वॉल्व। इसे समझने के लिए ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें यू विल अंडरस्टैंड विच प्लेटफॉर्म्स ऑफर डायरेक्ट प्लान्स वर्सेस विच आर ऑफरिंग रेगुलर प्लान्स। सिंस रेगुलर प्लान्स में एक मिडल मैन इन्वॉल्व है तो उसका एक्सपेंस रेशो विच इज द अमाउंट कंपनी चार्जेस टू मेंटेन द ओवरऑल फंड वो भी ज्यादा होता है। लुक एट दीज नंबर्स। आपको लगेगा डिफरेंस तो सिर्फ 1 या 2% का ही है, लेकिन ये 1 या 2% का डिफरेंस लॉन्ग टर्म में काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अगर आप एक SIP करवाते हो विच इज 6,000 रुपीज पर मंथ एंड यू आर कंटिन्यूइंग दिस SIP फॉर नेक्स्ट 25 years, कंसिडरिंग अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अराउंड 15%, रेगुलर प्लान जिसका एक्सपेंस रेशियो 2% है वो आपको रिटर्न्स देगा 1.2 CR, और डायरेक्ट प्लान जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% है वो आपको रिटर्न्स देगा 1.45 CR. That's huge the differences. So always go for direct plans in any mutual fund. बाकी के 4 फैक्टर समझने के लिए फॉलो का बटन प्रेस कर देना। प्लान टुडे फॉर द ब्राइटर टुमारो। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन पैरामीटर्स 5 शॉर्ट सीरीज पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंस रेशियो और डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स को समझा था, और आज हम समझेंगे पास्ट रिटर्न्स को। It's a famous saying कि past returns are not the indicators of the future performance, which is so true. बहुत से न्यू इन्वेस्टर्स ज्यादातर पास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स या 5 इयर्स का रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कोविड के बाद की बात करें तो मार्केट्स आर ग्रोइंग रियली वेल, जिसके कारण रिटर्न्स भी अच्छे ही लगेंगे। बट व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज नॉट द पास्ट रिटर्न्स ऑफ 1 ईयर और 3 इयर्स, बट रोलिंग रिटर्न्स सिंस द फंड्स हैव स्टार्टेड। What is rolling returns? These are basically returns of a fund in any 1 year or 3 years or 5 years of period. इसे समझने के लिए ये ग्राफ देखते हैं। Here we can see कि हर साल या हर 3 साल या हर 5 साल के रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, which obviously gives a broader view of the returns compared to only few previous years. Personally, I use Moneyworks for me and ET Money site for seeing the rolling returns of any fund, क्योंकि mostly websites आपको सिर्फ past returns ही दिखाएंगे। एंड दिस इज नो प्रमोशन। मुझे ये वेबसाइट्स अच्छी लगी तो मैंने सोचा ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ भी शेयर करूं। सो ऑलवेज सी रोलिंग रिटर्न्स देन ओनली द पास्ट रिटर्न्स ओवर अ फिक्स्ड पीरियड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लान टुडे फॉर अ ब्राइटर टुमारो। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन पैरामीटर्स 5 शॉर्ट सीरीज पार्ट 3। एक्सपेंस रेशियो और रोलिंग रिटर्न्स को समझने के बाद द नेक्स्ट पैरामीटर टू कंसिडर इज अल्फा। नाउ व्हाट इज अल्फा ऑफ अ म्यूचुअल फंड? This is the difference between the returns earned by a fund and its benchmark index over a period. हर फंड के अगेंस्ट एक बेंचमार्क फंड सेट किया जाता है, एंड द कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ दैट फंड आर ऑलवेज कंपेयर्ड विद द रिटर्न्स दैट बेंचमार्क इंडेक्स हैज गिवन। इसे समझने के लिए ये एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर द अल्फा फॉर 3 इयर्स इज 2.2%. अल्फा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. Returns should be greater than the benchmark. Another point is one should not look at the alpha but rolling alpha. जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा कि rolling returns are better parameter to select a fund than past returns. Similarly, rolling alpha is better than alpha, and you will get this rolling alpha on Moneyworks for me. And this is no promotion. मुझे ये वेबसाइट्स अच्छी लगी तो मैंने सोचा है यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर कर दूं. So you always see rolling alpha, then only alpha for past 1 years or 3 years. See you in the next video. Plan today for a brighter tomorrow. Mutual fund selection parameters 5 short series part 4. The fourth parameter which I will see is the upside capture ratio in deciding any mutual fund. Upside capture ratio denotes when the market is rising, how much of the upside a fund has captured compared to its benchmark. जितना ज़्यादा upside capture ratio होगा, the better the fund would be in the rising markets. Upside ratio of over 100 means that a given fund has beaten the benchmark during the period of positive returns. It helps understanding whether the fund would perform better than the markets during bullish times or not. For example, अगर कोई ABC growth fund है और उसका benchmark index है let's say Nifty 100, एंड एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर निफ्टी 100 ने 10% राइज दिया है एंड ABC फंड ने 12% राइज दिया है, सो दैट मीन्स इट्स अपसाइड कैप्चर रेशियो इज 120, विच इज गुड, राइट? And that is where the upside capture ratio should always be greater than or equal to 100, so that it is either performing at par with benchmark or greater than the benchmark. Hope you understand this fact.
See you in the next video. Plan today for a brighter tomorrow. Mutual fund selection parameters 5 short series, final part 5. The last parameter that I see for selecting any mutual funds is the downside capture ratio, which means when the market is falling, how much the fund has gone down compared to its benchmark index. हम सेम लास्ट वीडियो का एग्जांपल लेते हैं. सो सपोज इन द बेयरिश मार्केट द बेंचमार्क इंडेक्स हैज ड्रॉप्ड बाय 10%, बट द फंड हैज ड्रॉप्ड ओनली बाय 8%. So the downside capture ratio will be calculated as 8 by 10, which is 80%. The downside capture ratio should always be less than 100 in the previous times. इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गिरा है तो आपका फंड मार्केट से कम गिरा है एंड आपका लॉस मार्केट से कम हुआ है, एंड दैट इज वेयर द डाउनसाइड कैप्चर रेशियो शुड always be less than 100. So these are the 5 parameters that we discussed in our past 5 videos. Hope you have liked this short series of how you can select a mutual fund. In case of any queries, just DM me and I'll reply to you all. Plan today for a brighter tomorrow. Thank you.